Students, see the first question of the exercise. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. स्टूडेंट यहाँ पर हमें डिवाइड नहीं करना है बल्कि विदाउट डिवीजन हमें बताना है कि ये जो नंबर्स हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ, अगर किसी नंबर का आपने थ्योरम पढ़ी है, मैं आपको थ्योरम एक बार फिर से याद दिला देता हूँ. अकॉर्डिंग टू थ्योरम, एनी रैशनल नंबर ऑफ फॉर्म p by q where p and q are co-primes has a terminating decimal expansion if q is of form 2 to the power n and 5 to the power m for any positive integer n and m. That is, अगर किसी भी नंबर का यहाँ पर क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसका डिनोमिनेटर q जो होगा वो किस फॉर्म में होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m where n and m are any positive integer. So see, इसी थ्योरम पर बेस्ड हम ये सारे पार्ट करेंगे. See the first part. This is 17 by 88. So let is equal to p by q. Here q is equal to 8, that is 2 into 2 into 2. This is 2 to the power 3 equal to 2 to the power 3 into 5 to the power 0. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, 5 नहीं है. Here q is the form of 2 to the power n and to 5 to the power m, where n is equal to 3 and m is equal to 0. So 17 by 8 has a terminating decimal expansion. Now the terminating decimal expansion क्या होगा? 17 upon 8 is 17 by 2 to the power 3. That is 17 into यहाँ पर 2 to the power 3 है तो मुझे 5 to the power 3 चाहिए डिनोमिनेटर में. मल्टीप्लाई कराइए 5 to the power 3 से. आपको न्यूमरेटर में भी 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई करानी होगी. Now see the denominator is 2 to the power 3 into 5 to the power 3 will become 10 to the power 3. And numerator में 17 into 5 to the power 3 is 125 and 17 into 125 is 2125 upon 1000, that is 2.215, its decimal expansion. Now see the second part is 15 upon में 1600. So let is, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर. तो 5 से डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा? ऊपर 3 एंड नीचे 5 से डिवाइड होने के बाद 320. क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा. सो लेट इक्वल टू p by q. हियर q is equal to 320. इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन आर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 times 2 into 5 into 5. That is 2 to the power 6 into 5 to the power 2. Here q is of form 2 to the power n into 5 to the power m, where n is equal to 6 and m is equal to 2. So 15 upon 1600 has a terminating decimal expansion. Now 15 upon 1600 can be written as 15 upon 2 to the power 6 into 5 to the power 2. Now यहाँ पर 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है. आपको एक और 5 की पावर 4 यहाँ पर रिक्वायर्ड है ताकि आप नीचे 10 की पावर बना सकें. सो मैं यहाँ पे 5 to the power 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा. सो डिनोमिनेटर विल बिकम 15 into 5 to the power 4 एंड न्यूमरेटर 2 to the power 6 into 5 to the power 2 plus 4 is 6. That will become 15 into 5 to the power 4 will become 9375 upon 10 to the power 6. So that will become 0.009375. It's terminating decimal expansion. Now see the next part. Student, the number is 29 upon 343. That is equal to p by q, where q is equal to 343. Its factorization is 7 into 7 into 7, that is 7 to the power q. Now clearly q is not in the form of 2 to the power n and m 5 to the power m. So 29 upon 343 has non-terminating repeating decimal expansion. Now see the next part. Now in this part rational number is 129 upon 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. That equal to p by q. Here q is equal to denominator 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. Clearly it is not in the form of 2 to the power n and 5 to the power m. Since यहाँ पर 7 to the power 5 इन्वॉल्व हो रहा है जिसे हम नहीं हटा सकते.
So 129 upon 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5 has a non-terminating repeating decimal expansion. See the next part.